वेलकम गाइस। वेलकम टू द फर्स्ट प्रॉपर वीडियो ये चैनल का। और इस वीडियो में हम बात करने वाले वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में। दिस इज गोना बी एन इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलोसफी, क्योंकि मोस्टली आई थिंक वेस्टर्न फिलोसफी में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है रादर देन इंडियन। ये फ्रेडरिक नीचा और सॉक्रेटिस, प्लेटो, इन सब के बारे में। तो आई थिंक लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो ऑन द इंट्रोडक्शन एंड शोइंग द टाइम लाइन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी की एज टाइम वेंट ऑन कैसे कैसे नई फिलोसफीज आई, क्या क्या नई डिस्कवरीज हुई। तो लेट्स स्टार्ट टुडे विद द इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलोसफी, starting with pre-Socrates. These were a bunch of people जो ग्रीस में रहते थे, who started questioning existence and nature in general, कि हम यहाँ क्यों हैं, यूनिवर्स के बारे में, हम यहाँ क्या हैं, यूनिवर्स बना किससे है। मेनली इनके क्वेश्चन रिलेटेड थी कॉस्मोलॉजी से, विच इज़ ऑफ कोर्स द यूनिवर्स, बट their interest varied because there was multiple philosophers, बहुत सारे philosophers थे, and these people were responsible from rejecting myths to reality की, since अभी तक सबको myths बताए जा रहे थे कि भगवान ऐसे थे वैसे थे, these people were proof चाहिए, reality क्या है, exist क्या करता है, consciousness क्या है, all these questions were raised 2000 years ago. Like, wow. So these were the first thinkers of the Western philosophy. इनमें से कुछ के नाम बताता हूँ: थेल्स, पाइथागोरस, एनाक्सिमेंडर्स। पाइथागोरस जो है वही पाइथागोरस थ्योरम वाले, एंड थेल्स जो थे, देयर वाज नथिंग, they just kicked off the Western philosophical movement. तो थेल्स जो थे उन्होंने बोला था कि the ultimate truth is water. पूरा यूनिवर्स जो है पानी से बना है। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या पी के उन्होंने बोला था, बट ही टोल्ड दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ वाटर. सो दीज पीपल किक्ड ऑफ द फिलोसॉफिकल मूवमेंट इन द वेस्ट, और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बट दे प्ले अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द पीपल हु स्टार्टेड द थिंकिंग मूवमेंट इन द वेस्ट एंड हु क्वेश्चन एवरीथिंग, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस. एंड इट्स शॉकिंग कि 2000 साल पहले जिस चीज़ों के आंसर अभी भी हमारे पास नहीं है, कि यूनिवर्स क्या है, भगवान क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, 2000 साल पहले समवन थॉट अबाउट इट, टू विच आंसर्स अभी भी नहीं पता है. एनीवे, मूविंग ऑन. फिर कुछ सालों बाद जन्म हुआ इन सब के बाप का. आई मीन, इज कॉल्ड द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, और उनका नाम था सोक्रेटिस. वन ऑफ द रीजन्स वाई सोक्रेटिस वाज कॉल्ड द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इज बिकॉज his work influenced a lot of other great philosophers to come in time. And the thing to note here is Socrates के खुद के काम का कोई राइटिंग्स नहीं था या कोई नोट नहीं था, थैंक्स टू स्टूडेंट्स जिन्होंने उनकी नॉलेज को नोट डाउन किया, जिनकी वजह से आज उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में और उनकी नॉलेज के बारे में हमें पता चलता है. एंड द थिंग टू टेल अबाउट Socrates is, this was quite shocking to me, कि he was known to be profoundly ugly. कि अगली बोले तो काफ़ी होता, पर प्रोफाउंडली अगली का है. बट दैट डजेंट मैटर. what matters is what a great man he was, and we always prefer brains before beauty here. So moving on, there is this popular quote of Socrates जिसमें वो कहते हैं कि one thing I know and that I know nothing, which is so relevant in today's times as well as when he was alive, कि the more we learn about something, we get to know that how less we know about that particular thing what we are trying to learn. And इसको भी बढ़ा ले तो compared to the knowledge we have and the knowledge that's available in the world, our knowledge is so ignorable and we don't even matter. And Socrates was really a profound man, to be honest. But anyways, एक story है Socrates की, कि उनका दोस्त जो था, who told him that he is one of the wisest man in Greece. और Socrates himself didn't believe this, कि come on यार, मजाक कर रहा है, तो कोई तो होगा who is wiser than me. And he went on to see around arguing people, debating, कि देखने के लिए कि there will be someone यार who will be wiser than me. But his friend was right. उनको पता चला कि I am really the wisest man in Greece. Anyways, and the youth of the particular city and state were quite impressed by Socrates because of the questions he asked and the way he thought about things and how wise he was. And he motivated the youth too to think and question things in general. But ये जो चीज़ थी वो गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं कर रही थी, because he was charged for corrupting the youth and rejecting the Greek god, because he promoted people to think, and of course that meant rejecting the Greek gods as well, which was not proven yet. So he was sentenced to death by drinking poison, which was
known as Hemlock. उसकी painting बहुत popular है. There's a popular painting of Socrates dying. You can see that. Socrates को chance मिला था भागने का, but he rejected the offer, saying कि that would be disrespectful, and it's better to suffer injustice than commit one. Wow. And Socrates did die that particular day by drinking hemlock. And Socrates की बारे में हमें ये भी नोट करना चाहिए कि he was an old man and he wasn't scared of death. He instead believed that the immortality of a soul and death is not evil, because to free soul is guiding the soul to the eternal truth. That is the point of life. When death comes, it is the liberation of soul. Wow. Socrates was indeed a wise and a profound man to have ever walked on this planet. After Socrates, the next prominent philosopher in the West was Plato. Plato जो थे वो Socrates के student थे, and Plato was responsible for starting the first proper school, a university in Greece, which he named the Academy. The popular contribution or work of Plato was the theory of forms. And theory of forms बहुत complicated or confusing भी है, but I'll try to explain it briefly. Plato told कि we do not live in a real world because the world changes. जिस world में हम रहते हैं, that always changes, from seasons to nature to humans to anything. Humans की death होती है, नए humans आते हैं, and seasons भी, nature भी. There is autumn, there is monsoon, there is summer. These things are always changing. We live in a world of constant change, and this is the materialistic world, and materialistic world हमेशा change होता रहता है. But he believed that there is a perfect world that doesn't change, and materialistic world जिसमें हम रह रहे हैं is trying to impersonate it, and this, he told us, is its shadow. And this world was called the world of forms. थोड़ा complicated है, but I'll give an example कि जैसे the thought of a chair, कि chair कैसे बनाना है, that is always eternal. कि how a chair can look 100 different types. कि chair जो है अलग अलग डिजाइन हो सकती है एक particular chair की, but that thought of a chair कि chair होनी कैसे चाहिए, that will always remain constant. वो कभी बदलेगा नहीं. That is what Plato was trying to tell. I could be wrong. I might have wrongly interpreted him, but that is what I found out from this particular theory of forms. And there's another thing called allegory of cave, which I'll make a video on soon, which is too very, very shocking and a very, very eye-opening theory of Plato. Next came Aristotle, who was a student of Plato. Like, wow. Socrates के student थे Plato, and Plato के student थे Aristotle. And जो चीज़ मुझे पढ़ के बहुत ही shocking लगा था कि Aristotle tutored Alexander the Great. It is like merging of the two great personalities you have ever known. Ki if you are interested in philosophy and you're interested in history as well, this is like a wow moment for you. And reading this was a low blow for me. Ki Aristotle tutored Alexander the Great. Anyways, moving on. Aristotle's writing covered a broad range of subjects, such as physics, biology, ethics, logic, metaphysics, economics, drama, to name a few. Actually, Aristotle is credited for forming the modern logic. And logic, which seems basic to us right now, but he shaped the modern logic during that period of time. For example, in one of his books, The Poetics, which is a guide to all the writers out there, he told that every story has a beginning, middle, and an end. ये सब सुन के हमें basic लगेगा, but he was the person who shaped that logic. उसके पहले मतलब लोगों को वो भी नहीं पता था, I think, because I don't know why, but he shaped the modern logic. That's it I can tell you right now. And after this, Hellenistic period started, which was between the death of Alexander the Great and the emergence of Roman Empire under Augustus. A period when Greek culture mixed with various other cultures of Alexander's empire, क्योंकि Alexander का empire इतना बड़ा था कि बाकी सारे cultures जो थे फिर Greek cultures के साथ mix होने लगे after his death. And during this period of time, नए नए philosophies का जन्म हुआ. One of the popular philosophies was Stoicism, which was Marcus Aurelius start किए थे, and this meant कि there are limited things in our control and हमें उसके बारे में tension लेनी चाहिए. Let's not take tension about things which are not in our control. And skepticism, which meant doubting, and hedonism, which meant maximizing our own pleasure, and atomism, कि ultimately universe में एक चीज़ है जिसे बोलते हैं atom, that is inseparable
and that is the fundamental block of universe. And during this period of time, Christianity too spread widely, rapidly across Europe. From Socrates to Plato to Aristotle, this period of time was called as the classical period for Greece. फिर इसके बाद start हुआ Hellenistic period, which meant mixing of Greek culture with various other cultures of Alexander's empire. And during this period of time, जहाँ पे Greek culture mixed with various other cultures, various philosophies emerged as discussed earlier. And during this period of time, Christianity भी यूरोप में बहुत rapidly spread हुआ. And now we come to medieval times. Medieval times को middle age भी बुला सकते हैं, and it is from 5th century to 15th century. During the Middle Ages, scholasticism philosophy was on a rise. Or scholasticism was generally identified with Christian theology during the medieval period. It was sort of like merging the Greek philosophies to the Christian theology. क्योंकि वो टाइम पे सिर्फ दो बुक्स एग्जिस्ट करते थे, एक तो बाइबल एंड द वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो. एंड Scholasticism was a project of making these two books agree upon each other, and which ultimately focused on defending and universalizing the Catholic faith, as well as establishing the authority of Bible. And then came Anselm of Canterbury, and he is the father of Scholasticism. और उन्होंने बोला था कि through his ontological argument, he can logically prove the existence of God. Now, what does ontological argument mean? तो इसके कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि there are certain things which we can imagine, like Santa Claus. कि for sure we know that Santa Claus doesn't exist. Santa Claus, mermaid, unicorn, ये सारी चीज़ें in our imagination are imaginary created things. But there are certain things which are in our imagination as well as which exist in reality. जैसे Apple, TV, laptop, computer, pizza, horse, ये सारी चीज़ें हमारी imagination में भी है, and they actually exist as well. And what Anselm told in his ontological argument is, God is the greatest thing one can imagine. भगवान जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ है, और the greatest thing जो है जो कोई इंसान सोच सकता है. It is the epitome of greatness. And for anything to be greatest, उसकी एक शर्त होनी चाहिए कि it has to exist in reality. कि for a thing to be greatest, it has to exist in reality. Therefore, God exists. What? हाँ, यही बोल रहा था वो कि for a thing to be greatest, it has to exist. That makes it greatest. कि अगर कोई चीज़ अगर exist ही नहीं करती तो greatest कैसे होगी? What? Anselm? आप समझ रहे हो ना? He meant this कि for the greatest thing to exist, it needs to exist in reality for it to be called the greatest. So it is the greatest. So God exists. इसका एक सही से जवाब दिया था ग्वानीलो ने. He didn't agree to this idea, और उन्होंने सोचा, वो उसको रिप्लाई में दिया था कि सोचो एक आइलैंड है और तुम एक ग्रेटेस्ट आइलैंड के बारे में सोच रहे हो, एंड फॉर क्योंकि तुम ग्रेटेस्ट आइलैंड के बारे में सोच रहे हो, वो ग्रेटेस्ट इसलिए होगा क्योंकि वो सच्ची में है. और उसको जवाब दिया कि he used the example of islands and he told कि think if you only think about the best islands to exist, कि आज आप स्विमिंग पूल है, मौसम मस्त है, कोई जानवर नहीं है, सिर्फ तुम्हारा पीस है, मौसम भी गर्मी नहीं होती, the perfect island to exist. And the idea of perfect would be more better if it actually existed. तो सेंस नहीं बना था ना, of course it doesn't make sense. ये उसने बोला, उसको रिप्लाई में जवाब दिया तो he told that आइलैंड वो सारी बकवास चीज़ों के लिए वर्क नहीं करता है, सिर्फ भगवान के लिए वर्क करता है. लेकिन क्या चल रहा है इधर, ये क्या चल रहा है इधर, ये मैं जब ये सुन रहा था तो मेरे को क्या बोलना अभी यार, लाइक मैं भी कुछ भी प्रूव कर सकता हूँ. फिर द आइडिया ऑफ परफेक्ट पार्टनर इज अ मिथ, एंड दिस ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट टेल्स एनीथिंग कैन एग्जिस्ट इन. या तो मैं ढंग से नहीं समझा ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को, या फिर मेरे को बोलना नहीं कुछ आगे अभी. Okay, anyways, moving on. Then came the late medieval age, जिसमें Black Death आई, which killed almost 75 to 200 million Europeans. And if we compare that to the people killed in COVID people right now, as of now, is 6.7 million. And Black Death killed 75 to 200 million people. Wow. Then started the Renaissance period. Renaissance का मतलब क्या होता है? Renaissance means rebirth. Rebirth of whom? Rebirth of Greek philosophy, where the Greek philosophy came back.
people started getting into art, science, and dramatics, and things were starting to pick up in Europe. डा विंची ये टाइम पे मोनालिसा को ड्रॉ किए थे, कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था, शेक्सपियर प्लेज लिख रहा था, वास्को ड गामा ने इंडिया का रूट डिस्कवर किया था, एंड गैलीलियो और ब्रूनो ऑल्सो सच ग्रेट पीपल एग्जिस्टेड. और ये टाइम पे जो डिस्कवरीज हुई थी, some of them by Galileo and Bruno, were against the Christian thought and they were punished for this. Galileo ने बोला था कि अर्थ इज रोटेटिंग द सन, सन इज नॉट रोटेटिंग द अर्थ. तो दिस वाज ऑफ कोर्स अगेंस्ट द क्रिश्चियन थॉट, क्योंकि क्रिश्चियन लोग ये मानते थे वो टाइम पे कि द सन रोटेटेड अराउंड द अर्थ, which was of course proven wrong later, but he was house arrested for 8 years and later on he went on to pass away through some illness and old age. फिर ब्रूनो का, this is horrifying. Bruno said that कि जो भी stars हम देखते हैं, they are like sun and they have their own planets and earth is not the center of the universe. And this theory was, again, not Christian believed that earth is the center of the universe, and the Christian church didn't agree this and they ended up burning him alive. But the good thing is the place where Bruno was burned, आज उधर ही उनका statue है. Then began the age of enlightenment, and age of enlightenment where people started to think, they started to reason things, कि whatever is happening around us is right or wrong. Instead of just listening to the church and the kings, they started to think and reason what is good or bad for them. Through this started the age of enlightenment as well as the modern age. And the first philosopher of the modern age was Rene Descartes. And उनकी वजह से एक statement आया था कि Cogito ergo sum, which meant I think therefore I am. Quite a popular statement, which meant that you can doubt everything but you can't doubt the doubter doubting. Okay, now what does this mean? It meant that कि तुम दुनिया में किसी को भी doubt कर सकते हो. The existence of anything, from your parents to your dog to your friends to your family relative, anything. You can doubt the existence of anything, but what you can't doubt is yourself. The person thinking and doubting himself, that process of thinking proved your existence. And इसकी वजह से आया body mind problem as well. Again, a very vast topic, a very dense topic. और इसको अगर वापस से briefly बोलूँ मैं, तो it meant that कि हमारे how there is so much more to us than just our bodies, and how the society categorizes us depending upon the way we look, our body looks. We are categorized into a specific type of people. But we personally know that how there is so much to us than just our body or the way the society perceives us. And फिर इसकी वजह से dualism भी आ गया, which meant materialism and consciousness. Materialism, which is our body, and consciousness, which is our mind. And then monoism भी आ गया. फिर monoism से God का concept. It's a very interesting and a very dense and vast topic, which we'll definitely cover in the further videos. Rene Descartes was also the first modern rationalist. अभी rationalist क्या होता है? Rationalist meant that rationally generally in simple words meant to reason things, you know, कि कितना logical sound कर रहा है, instead of believing any religious belief or, you know, coming to getting a conclusion through our emotional response. Reasoning it meant rationalism. And in British, this thing started called Empiricism by John Locke and David Hume. Although Francis Bacon के काम में थोड़ी झलक दिख जाती थी Empiricism की, but the core ideas were put forward by John Locke, and that's why he's called the father of Empiricism as well. Okay, now what does Empiricism mean? Empiricism बोलता है कि we gain knowledge through experimentation and experience through our senses, which is eyes, taste. इनके through हमें knowledge मिलता है, which is the opposite of rationalists who believe that through reasoning things logically you get the knowledge. Now you tell me which side are you on? Are you an empiricist or are you a rationalist? People who are generally lazy can consider themselves rationalist. कि इधर John Locke और David Hume बोल रहे हैं बाहर जाओ experiment करो, you know, through your senses you'll get knowledge. But you're like, dude, I'm a rationalist. मैं घर में बैठे बैठे सोच लूँगा सब कुछ, टेंशन मत ले. Which of course, अभी no comments. Before Age of Enlightenment, there was this idea among people, which was of course imposed by the king and the church, कि the king is selected by the god, and अगर लोग उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर उनको punish किया जाएगा. But because of Age of Enlightenment and because of reasoning and thinking, लोगों को पता चला कि the power is with them.
and not with the king. वो चुनेंगे कि उनका राजा कौन होगा, and जब तक उनके लिए चीज़ें अच्छी चल रही हैं, as the citizen के लिए चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तब तक वो राजा की सुनेंगे. पर जब तक उनका खुद का बुरा हो रहा है, then they will start the revolution. This was known as the social contract. And during this time, this philosopher called Thomas Hobbes, again a British philosopher, wrote his book Leviathan, जिनमें वो कहते हैं कि we need to agree upon the king no matter how imperfect he is, क्योंकि human by nature are animals. And फिर there is also this parameter कि till what extent, कि कब तक हम king की बुराई सहन कर सकते हैं, कि अब तक जब तक अच्छा चल रहा है it's good, well and fine, but till what extent should we start revolting? What's that borderline? To which Thomas Hobbes told that we need to, no matter what, कितना भी imperfect हमारा king हो, हमें उससे agree करना चाहिए, because it is always better than bloodshed. And हमें revolt तभी करना चाहिए कि अगर वो तुम्हें जान से मारना चाहता हो तो then you can revolt, फिर कोई टेंशन नहीं है. पर अगर ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए कि टैक्स बढ़ा दिया, किसी को बिना मतलब मार दिया, किसी को बिना मतलब जेल में डाल दिया, वो सब चीज़ों के लिए बिना मतलब रिवोल्ट करोगे, दैट डजंट मेक सेंस. तो एक्चुअली भाई के साथ ये हुआ था कि व्हेन ही वाज 64 years old देयर वाज अ ब्लडी सिविल वॉर इन ब्रिटिश, जिसमें बहुत ब्लडशेड हुआ था, विच इनकी फट गई थी वो देख के. एंड इन्होंने सोचा कि ब्लडशेड से अच्छा भाई मेंटेन द पीस, चाहे किंग कितना भी बुरा हो, कितना भी इम्परफेक्ट हो, जस्ट अग्री अपॉन हिम, इट्स ऑलवेज बेटर देन द ब्लडशेड, बिकॉज बाय नेचर वी आर ऑल एनिमल्स. और हर छोटी छोटी चीज़ में रिवोल्ट करके ब्लडशेड दिखाना, इट्स नॉट गुड. तो अगर तुम्हारी लाइफ थ्रेटन कर रहा है तो ही जाके रिवोल्ट करो. फिर आया इमैनुअल कांट, बट देख के लगता है इमैनुअल कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, और इन्होंने एम्पिरिसिस्ट और रैशनलिस्ट को बोला कि झगड़ा मत करो भाई लोग, देखो तुम दोनों एक साथ काम कर सकते हो, इट्स नॉट ईदर दिस और दैट, इट्स दिस एंड दैट. दोनों चीज़ें एक साथ काम कर सकती है. यू कैन ऑल्सो वर्क थ्रू रैशनलिज्म एज वेल एज एम्पिरिसिज्म. नॉलेज इज गेन थ्रू बोथ ऑफ दिस थिंग्स, इट्स नॉट दिस और दैट. एंड उन्होंने ये भी बोला था कि हम गॉड को कॉन्सेप्ट प्रूव ही नहीं कर सकते, वी कांट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बिकॉज वी एज ह्यूमंस हैव लिमिटेड सेंसेस, और हमारा दिमाग का अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, विच इज़ ऑल लिमिटेड टू सर्टन थिंग्स. तो प्रूविंग थिंग्स सच मेटाफिजिकल थिंग्स लाइक गॉड, रीबर्थ, आफ्टर लाइफ, इट्स बियॉन्ड आवर रीच. तो ये सब सोच के टाइम वेस्ट मत करो. दैट वाज क्विक, दैट वाज सुपर क्विक, बहुत तेज बोल रहा हूँ. एनीवेज, इमैनुअल कांट की वजह से जर्मनी में दिस थिंग स्टार्टेड कॉल्ड जर्मन आइडियलिज्म. अभी आइडियलिज्म भी कम्स अंडर दैट बॉडी माइंड प्रॉब्लम इटसेल्फ, व्हिच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन द फर्दर वीडियोस, तो वेट फॉर दैट. नाउ दिस जर्मन आइडियलिज्म वाज स्टार्टेड बाय हेगेल बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ कांट की काम की वजह से. ही गॉट इंस्पायर्ड एंड ही स्टार्टेड दिस जर्मन आइडियलिज्म थिंग. एंड it's confusing, dude. Hegel is out. I don't know, man. Hegel is confusing. He's contradictory. I don't know what he is, यार. मेरे को कुछ समझ में नहीं आया when I tried to read him. I watched a couple of YouTube videos. वो YouTube videos भी इसमें इसको गाली काट रहे थे. I don't know, man. Hegel. He's some other guy, dude. पढ़ूंगा. I'll try to maybe someday. Hegel. I'll find you and I'll read you. Then came Arthur Schopenhauer, and Schopenhauer was again part of the German idealism movement itself, and he's considered one of the darkest philosophers of the West. वो बोलते हैं कि luckiest are the ones who weren't born, and फिर luckiest are the ones जो पैदा होते ही मर गए, and the unluckiest are the ones who are alive like us. In short, he meant that life is not worth living. Why? Germans are like depressed, fucked up, bro. इनको पढ़ के तुम सुसाइडल डिप्रेस्ड हो जाओगे भाई. नेक्स्ट लेवल अलग लोग हैं भाई ये German philosophers, not a piece of cake to read them. Anyways, he was a huge admirer of the Indian philosophy, especially the Upanishads. He told that the highest form of knowledge available is the Upanishads, which is quite impressive and a very proud moment for us Indians. Then came Friedrich Nietzsche, who is one of the most popular philosophers right now, and my personal favorite as well. He and Kant, they are my favorite philosophers right now, and some of his philosophies are really commendable. Some of his, the way he inspires you, like Uberman, which means Superman, and will to power. He meant that life is nothing but our quest to strive for greatness.
If there is a goal which you think is impossible, then that's your purpose. All that's life is all about, for you to become that in achieving that impossible goal. That's your journey. He's commendable यार. He anyways वो ये भी बोल दिया था God is dead. उसकी एक अलग कहानी है. I think if you're lost and need a sense of direction in your life, reading Nietzsche can definitely help you. Although उनका भी वो German side है where he tells that humans are entering towards catastrophe and this world is heading towards the end. ये सारी चीज़ें भी बोलते हैं वो, but there is a side of him which truly will give you a sense of direction in your life. Friedrich Nietzsche's life wasn't easy. He did face a lot of trouble in his life. फ्रेडरिक नीचा को 3 बार एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था. और फिर भी come on Nietzsche. Anyways, moving on from my love for Nietzsche couldn't, but anyways, during 19th century this thing called Pragmatism started in America, जो बोल रहा था कि यूरोप अच्छी आइडियाज है, फिलोसफीज अच्छे हैं, पर आर दे प्रैक्टिकल. अच्छी बात है प्रैक्टिकल है तो वरना निकल, पहली फुर्सत में निकल. दैट इज व्हाट दे टोल्ड कि हाउ प्रैक्टिकल आर योर आइडियाज, एंड दैट इज व्हाट प्रैग्मेटिज्म मीन्स, व्हिच इज प्रैक्टिकल. बीइंग प्रैक्टिकल इज बीइंग प्रैग्मेटिस्ट. एंड अभी फिलोसफीज की बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं. आपको पता है कि साइंस भी फिलोसफी की एक ब्रांच है. इट वाज कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी. एंड फिर साइंटिफिक मेथड भी आया कि if you see something happening and you notice it, try to prove it, and then फिर peers के साथ debate or argument होता है, and in that if you succeed then your theory gets accepted. If not, try seeing something else happening. And then there is this thing called epistemology as well. और इसका मतलब ये है how to gain knowledge in correlation to our brain. How to gain knowledge, what's that process, what's that method of gaining knowledge in correlation to our brain. Then came metaphysics, which of course is the most interesting. इसके अंदर ही सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे गॉड, रीबर्थ, एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स एंड हाउ डू थिंग्स वर्क इन जनरल, लाइक टाइम, रीबर्थ, गॉड, स्पेस, ये सारी चीज़ें आती है रीबर्थ में, क्या मेटाफिजिक्स में. देन केम लॉजिक. लॉजिक का मतलब होता है रीजनिंग, चीज़ों को करेक्टली रीजन करना. फिर एस्थेटिक्स को अगर समझाना है तो एस्थेटिक्स का जो आई थिंक विच इज़ क्वाइट रेलेवेंट राइट नाउ, उससे आपको समझ में आ जाता है, विच मीन्स ब्यूटी. वाई दिस इज सो ब्यूटिफुल, वाई इज एनीथिंग सो ब्यूटिफुल, व्हाट कैचेज योर अटेंशन, दैट कम्स इन फिलोसफी. उस कैटेगरी को एस्थेटिक्स बोलते हैं. एंड एथिक्स, अब एथिक्स इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गुड और बैड, कि क्या चीज़ है जो सेपरेट करती है बिटवीन गुड एंड बैड, दैट कम्स अंडर एथिक्स. ऐसे करते करते 20th सेंचुरीज अलग अलग मूवमेंट स्टार्ट हुए, जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ऑब्सर्डिज्म. अलग अलग टॉपिक है बहुत सारे, विच ऑफ कोर्स आर ब्रांच टू सिंगल थिंग विच विल स्टडी इन द फ्यूचर वीडियोस. ये वीडियो वो घोड़े की पेंटिंग जैसा क्यों हो रहा है, जो स्टार्टिंग में अच्छा था, फिर धीरे धीरे होते होते पूरा अजीब सा हो गया, घोड़ा कम कुछ दूसरा ही दिख रहा था वो. आई थिंक ये वीडियो जो है उसका ऑडियो वर्जन है. एंड विथ ऑल दैट अभी हम पहुंच चुके हैं 21st सेंचुरी में, वेयर वी ऑल एग्जिस्ट. वी स्टिल डोंट नो व्हाट कॉन्शियसनेस इज, वी स्टिल डोंट नो व्हाट एलियंस आर, वी डोंट नो व्हाट गॉड इज, वी डोंट नो व्हाई वी आर हियर, वी डोंट नो व्हाट्स आवर पर्पस, वी नो हाउ लॉन्ग वी आर हियर, वी डोंट नो व्हाट्स द एंड ऑफ द यूनिवर्स. एंड maybe we'll never know. Maybe we are not supposed to know the answers for such questions. Maybe we are supposed to live here and do whatever we can. That's the driving purpose, I think. Maybe the answers are told to us once we die. Maybe the answers are already written. Who knows what's the reality, but एक चीज we can decide is what we want to do. We have the freedom to do whatever we want. And that's what should be the motivating factor for all of us, is to wake up and redefine ourselves every day, reshape ourselves towards mastery and in attaining a specific goal which seems impossible. Just like Nietzsche said, strive for greatness. And with that, I'd like to end this episode again with a quote of Nietzsche that I really adore. और वो quote है, to give birth to a dancing star, you must have chaos within. Thank you and see you next week.